गुड इवनिंग समस्त को आउ प्रणाम मध्य। तो फ्रेंड्स देखंतु जो माने प्रिपरेशन करूचंती हमर आगामी हाई स्कूल टीचिंग एग्जामिनेशन LTR पई जो माने प्रिपरेशन करूचंती समानक पई पॉलिटर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु नेक आछि तो आमे डिस्कशन करबा जोटे कि आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो। तो चैनल ले जदि आपण माने नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे, सांग मान को शेयर करिवे, वीडियो रे गुटे गुटे लाइक करिवे। ता सहित जदि आमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ले आपण माने जॉइन करि नांती डिस्क्रिप्शन ले एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक अछि जाई कि आपण माने फ्री रे जॉइन करि परिबे। जा द्वारा आमे जहां भी क्लासेस किंबा आपनकर पीडीएफ अपलोड करिवो आपण माने पीडीएफ आपण पाई परिबे। ठीक अछि। एवं ता सहित मु अति शीघ्र मॉक टेस्ट आपणकर वेबसाइट माध्यम मु नेकी आछि भाबुची मॉक टेस्ट आपणकर फ्री कर देबी। ठीक अछि। आ जो माने वीडियो पई प्रैक्टिस करिया पई चाहिबे हम सहित जॉइन करि परिबे। किंतु मॉक टेस्ट जो आज जो ग्रुप रे मु देइथिले सेटा उडे डेमो मॉक टेस्ट थिला तो जस्ट मु तारि पर काम करूची तो सेथि पई मु आपण मानन को उडे डेमो आकारे देइथिली। तो मु एई बळी 30 टा 40 टा पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपण मानन को पई प्रोवाइड करिवि। ठीक अछि। तो जीवा ता पूर्व कहि रखुची जदि आपण माने सीरियसली प्रिपरेशन करूचंती जदि थ्योरी सहित आपण माने एमसीक्यू पढिबा पई चाहूचंती मैथ कोंतु रीजनिंग कोंतु कंप्यूटर कोंतु करंट अफेयर्स कोंतु ता सहित जीके रे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करूचु। तो जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहूचंती हम सहित जॉइन करि परिबे। ए जो नंबर देखुचंती 8917270933 ए नंबर रे पेमेंट करिकि सेम नंबर स्क्रीनशॉट शेयर करले हम आपण माननकु जॉइनिंग करे देबो। ठीक अछि। जीवा प्रथम क्वेश्चन आपण माननक सामने रे क्वेश्चन पचारची सुप्रीम कोर्ट रो जो जजेस अछंती तो तांकर रिटायरमेंट एज केते जल्दी 100 क्वेश्चन अछि तो निहाती भाव में आमे पूरा क्वेश्चन बेसिक लेवल लो टॉप लेवल पर्यंत क्वेश्चन को आमे सॉल्व करिबा। तो को करेक्ट आंसर कोन हबो? करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट रो जो जजेस अछंती तो तांकर रिटायरमेंट एज केते? वेरी गुड करेक्ट आंसर 65 जो मन देइचंती करेक्ट आंसर अछि 65 हबो करेक्ट आंसर 65 हबो करेक्ट आंसर। किंतु जदि हमकु पचारि थांता होची हाई कोर्ट ताले हाई कोर्ट रहउची आपनकर 62 रहइबो। हाई कोर्ट रहउची 62 रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म ऑफ एरिया? तो एरिया अनुसार जदि हमें देखिबा तो कोडा हबो करेक्ट आंसर? तो एरिया अनुसार जदि हमें देखिबा जे सबुठारु बड़ लोकसभा मंडली आपनकर लद्दाख रहिबो। ऑप्शन नंबर ए जो मन देइचंती करेक्ट आंसर अछि। मो एक्सप्लेनेशन करू नाही मु जेहेतु शीघ्र कर देबी 100 क्वेश्चन रहिची तो हमें केवल रिवीजन पई ही जीवा। ठीक अछि। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन लद्दाख हबो करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 3 नंबर द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 रु 545 एटा आपनकर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हेतिला? एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आपनकर करा जाईची किए कहबो करेक्ट आंसर? तो एटा आपनकर 31 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आपनकर 1973 अनुसार। ठीक अछि मन रखिबो। नेक्स्ट हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? किए आपनकर अपॉइंट करि थांती एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर कोन हबो? कमेंट सेक्शन ले कमेंट करो कोन हबो करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर आपनकर प्रेसिडेंट ही करि थांती। के करि थांती? प्रेसिडेंट करि थांती। जीवा 5 नंबर क्वेश्चन द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिसाइड बाय? एटा आपनकर कहा द्वारा डिसाइड हेता है? सुप्रीम कोर्ट रो जो जज रहिचंती तो तांकर सैलरी कथा जदि कहबा एटा आपनकर पार्लियामेंट द्वारा ही डिसाइड हेता है। एटा केते नंबर आर्टिकल मते कमेंट सेक्शन ले कमेंट करके कहबो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि रिटायरमेंट एज पचारछि हाई कोर्ट जजंकर ऑलरेडी मु डिस्कशन करिछि जे होछि आपनकर 62 प्रथम क्वेश्चन ले मु आपनको कहि के आछि 62 हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट method of nominating the governor in the Indian constitution has been followed to the which country? एटा आपनकर को कंट्री अनुसार रहिछि?
जो गवर्नर को आम कौन करुँच गवर्नर को जो नॉमिनेट करा जाउछि तो एटा आपनकर को कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि किए कहबो करेक्ट आंसर कोन हबो एटा आपनकर कनाडा रो आसीछि कोडु आसीछि कनाडा हबो करेक्ट आंसर कनाडा नेक्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड प्रथम मीटिंग जदि आमे देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आपनकर केबे हितला केबे हितला वीडियो को शेयर करिवो तो करेक्ट आंसर कोन हबो एटा आपनकर 9 डिसेंबर 1946 रे आपनकर हितला जो माने जॉइन करिया पय चाहुचो 891727 0933 ए नंबर रे पेमेंट करके जॉइन करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार जदि आमे देखिबा जो आपनकर सुप्रीम कोर्ट कोउटी आपनकर एस्टैब्लिश हेइतला तो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर तो को करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन आपनकर कलिकता रे हितला इन कलकत्ता हबो करेक्ट आंसर कलकत्ता तनु करेक्ट आंसर कलकत्ता केबे आपनकर 1774 एडी रे नेक्स्ट बाय व्हिच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिवाइड ऑन बजट 10 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कोन हबो स्पीड करिवा निश्चित स्पीड करिवा तो करेक्ट आंसर जदि हमें देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन आपनकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नेक्स्ट बाय व्हिच एक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज मेड फास्ट बाइकैमरल एटा आपनकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अनुसार ठीक अच्छी नेक्स्ट इन व्हिच केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन 12 नंबर क्वेश्चन 1000 थर आपनकर करा जाईची 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन होची आपनकर केशवानंद भारती हला वर्सेस केरला केसेस मु बहुत स्पीड करके जाउची कारण एटा होची गुटे वन टाइप ऑफ रिवीजन आमे कहि परिबा चलो नेक्स्ट बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ओनली ए स्टैट्यूटरी राइट एटा को आपनकर गुटे स्टैट्यूटरी राइट रूप रे आपनकर निया गला एटा आपनकर केबे हितला तो को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार वेरी गुड आंसर करेक्ट आंसर आपनकर 44तम अमेंडमेंट एक्ट जोटा होची 1978 राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ राइट वर्तमान जदि हम देखिबा एटा आपनकर को प्रकार राइट एटा आपनकर गुटे स्टैट्यूटरी राइट हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर व्हिच आर्टिकल हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जोटा को ईडब्ल्यूएस बोली हमें कहउचंदी ईडब्ल्यूएस जोटा को हमें ईडब्ल्यूएस बोली कहउचंदी लीगल राइट सॉरी एटा आपनकर स्टैट्यूटरी नुहे एटा लीगल राइट हबो राइट तो यहाँ करेक्ट आंसर आपनकर ऑप्शन नंबर डी हम लीगल राइट हम राइट चलो यहाँ कह करेक्ट आंसर कौन हम यहाँ कौन हम कह करेक्ट आंसर
Which article has been made in the constitution to provide the reservation to the economically backward classes? एटा आपनकर दीटा हबो एटा आपनकर 15 आउ 16 तेणु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अब यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ राइट इज द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड टू द चिल्ड्रेन ऑफ द एज 6 रु 14 एटा आपनकर को राइट भीतर आसीबो 16 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर एटा आपनकर फंडामेंटल राइट जोटा कि आर्टिकल कते 21 which fundamental right cannot be abrogated or limited even during national emergency किए कहबो करेक्ट आंसर कोन हबो which fundamental right cannot be abrogated or limited even during the national emergency तो करेक्ट आंसर एटा आपनकर पर्सनल फ्रीडम राइट आउ राइट टू लाइफ ए दीटा ऑप्शन नंबर डी अब करेक्ट आंसर वेरी गुड इन व्हिच ईयर बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केबे आपनकर 1976 रे आपनकर हला 1976 What is the purpose of including directive principle of state policy in Indian Constitution? कौन पर्पज थिला डीपीएसपी को कहीं कि आपनकर स्थानांतरित करागला तो यार करेक्ट आंसर जदि हमें देखिबा ऑप्शन नंबर ए एस्टाब्लिशिंग सोशल डेमोक्रेसी आउ एस्टाब्लिशिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हबो बोथ हबो द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वेलफेयर स्टेट कथा जदि कहबा एटा आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन मेड एटा कौन हम करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर होची आपनकर आर्टिकल 43 ए नेक्स्ट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इश्यू द ऑर्डिनेंस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय व्हिच एक्ट एटा को एक्ट हबो 22 नंबर क्वेश्चन एटा आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोटा होची 1935 by which act was direct system implemented in the center डायरेक्ट सिस्टम जदि हमें देखिबा सेंटर रे जो इम्प्लीमेंट हैला एटा आपनकर को एक्ट अनुसार जदि टॉपिक वाइज जीके प्रैक्टिस करिया पे चाहूचो हम सहित जॉइन करि परिबो तो करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट 1935 in which act the provision to establish all India Federation was made ये भी आपनकर सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 who proposed to the frame of the constitution of India by the elected constituent assembly क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना एमानक मध्य कौनसी नुहे 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जदि हमें देखिबा क्रिप्स मिशन कैबिनेट नुहे क्रिप्स मिशन हम ये प्रपोज कथा कही तो क्रिप्स मिशन हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट अंडर हुम वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड एटा आपनकर कैबिनेट मिशन जोटा 1946 अकॉर्डिंग टू द स्कीम प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट मिशन इन व्हाट पर्सन वाज
the election of representative from the provinces in the constituent assembly केते 10 लाख हम करेक्ट आंसर 1 मेंबर पर 10 लाख पॉपुलेशन वेरी गुड चलो नेक्स्ट हु इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 28 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हम बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द डिफरेंट प्रोविंस when was the objective resolution presented by the Pandit Jawaharlal Nehru in the constituent assembly केबे हितला एडा आपनकर डिसेंबर 13 1946 रे हितला when was the objective proposal presented by the Nehru accepted the constituent assembly 30 नंबर क्वेश्चन एडा आपनकर जनवरी 22 1947 रे हितला नेक्स्ट व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म 31 नंबर क्वेश्चन कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड करेक्ट आंसर जुलाई 22 1947 when was Indian Constitution fully implemented fully आपनकर इम्प्लीमेंट है केबे 32 नंबर क्वेश्चन जनवरी 26 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनैक्टेड ऑन द नवंबर 26 1949 बाय करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलो नेक्स्ट व्हेन वाज जन गण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एटा को नेशनल एंथम रूप में केबे ग्रहण करा गला एटा आपनकर जनवरी 24 1950 मु पूरा स्पीड कर देउची द अशोक पिलर वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल सिंबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा आपनकर केबे हला तो यहाँ आपनकर होता जनवरी 26 1950 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 36 नंबर क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिलेटेड टू वर्क द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 37 नंबर एटा कौन हम करेक्ट आंसर एटा जीबी मालभंकर थिले जीबी मालभंकर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आंबेडकर जहाँ पढ़ीच खाली मने पकेबार समय 38 नंबर अगस्त 29 1947 डॉक्टर बी आर आंबेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम व्हिच प्रेसिडेंसी या आपनकर को प्रेसिडेंसी रु इलेक्टेड हेतिले तो करेक्ट आंसर होची आपनकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी included in the preamble of the Indian Constitution has been taken from which country एटा आपनकर को कंट्री रु आसीची एटा को कंट्री रु आसीची 40 नंबर क्वेश्चन एटा को आपनकर फ्रांस रु निया जाईची कोड निया जाईची फ्रांस इज द करेक्ट आंसर द प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ enshrined in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of which country 41 नंबर एटा आपनकर जापान रु निया जाईची कोड निया जाईची जापान रु निया जाईची द कंप्लीशन ऑफ
parliamentary privilege in the Indian constitution is based on the constitution of which country? Correct answer होची आपनकर UK. UK is the correct answer. UK. The fundamental rights included in the constitution of India are inspired by which constitutional provision of which country? 43 number UK. UK. Through which constitutional amendment was the 9th schedule added to the Indian constitution? जो फास्ट कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रही आपंकर 1951 फास्ट कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 अनुसार ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट व्हिच शेड्यूल of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of the scheduled area in various states? Correct answer होची आपनकर 5th. The right to levy duties and taxes by the governments is mentioned in which schedule of the Constitution? এটা आपनकर 7th schedule रे कहा जाइछि 7th schedule. In which schedule the State Land Reform Act has been included to provide the constitutional protection? तो करेक्ट आंसर होची आपनकर 9th schedule. 9th schedule. What is the basic element of a presidential governance system? प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम रे जदि आमे बेसिक एलिमेंट देखिबा तो बेसिक एलिमेंट आपनकर कोन हबो? करेक्ट आंसर होची आपनकर सिंगल एग्जीक्यूटिव. What is the main point of difference between India's parliamentary system of government and Britain's parliamentary system of government? 49 नंबर क्वेश्चन कोटा आपनकर डिफरेंस रहउची? Very good. Correct answer judicial review. Judicial review. The Constitution of India is federal. It is determined by. इटा आपनकर का द्वारा डिटरमाइन हुए ना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इन व्हिच सेशन द कांग्रेस जनगण मन वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? आराम से कोई परिबो कौ सेशन रे आपनकर गान करा जाइतला? तो करेक्ट आंसर होची आपनकर कलकत्ता सेशन जोड़ा 1911 रे गान करा जाइतला. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर सिंगिंग द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम को गान करिवा पई आपन को पचारिछि स्टैंडर्ड टाइम केते बा दरकार? के कहबो स्टैंडर्ड टाइम केते बा दरकार? स्टैंडर्ड टाइम मात्र होची आपनकर 52 सेकंड. 52 सेकंड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश्ड ए गुड बैलेंस बिटवीन मोर रिजिड एंड मोर फ्लेक्सिबल. एटा आपनकर किए कहिदिले? एटा किए कहिदिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नेकी ए कथाटी आपनकर किए कहिदिले? तो ए कथाटी को आपनकर केसी होयर कहिदिले? ऑप्शन बी. What is the reason for expansion of Indian Constitution? कहीं के को एक्सपेंशन करा गला ता रीजन कौन रही? 54 नंबर क्वेश्चन ना सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पाई. इन देयर नेशनलिस्टिक रेस्पॉन्स द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन
did estimate the importance of the interests and sentiments of the minorities. एटा आपनकर किए कहिथिले जो मैंने जॉइन करवा कथा हम सहित जॉइन करि परिबो तो करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा एटा आपनकर इवर जेनिंग्स कहिथिले वेरी गुड हु सेड दैट इंडिया इज ए सेमी फेडरल स्टेट इंडिया गुटे सेमी फेडरल स्टेट बोली आपनकर किए कहिथिले इंडिया गुटे सेमी फेडरल स्टेट बोली किए कहिथिले एटा भी आपनकर कैसीवेयर कहिथिले Who is the main source of the political power in India? 57 नंबर तो करेक्ट आंसर होची आपनकर पब्लिक Who suggested that the Indian National Congress should be dissolved as a political party after independence of India? एटा आपनकर किए कहिथिले 58 नंबर महात्मा गांधी कहिथिले हु सेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू इंडियन फेडरलिज्म एटा आपनकर जी ऑस्टिन कहिथिले सब सिलेक्टेड यार पीडीएफ जदि नवा पई चाहुचो हम टेलीग्राम रे जॉइन करि परिबो इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर वेस्टेड इन कहा तरे आपनकर न्यस्त रहइबो एटा आपनकर प्रेसिडेंट को हाथ में न्यस्त रहिबो का हाथ में न्यस्त रहिबो प्रेसिडेंट को हाथ में एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हिच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर टा का भीतर आसीबो एग्रीकल्चर टा आपनकर का भीतर आसीबो स्टेट लिस्ट भीतर आसीबो एग्रीकल्चर पंचायत राज एटा आपनकर का भीतर आसीबो पंचायत राज टा आपनकर का भीतर आसीबो पंचायत राज पंचायत राज भी आपनकर स्टेट लिस्ट भीतर आसीबो मैरिज डिवोर्स एवं अडॉप्टेशन एटा आपनकर इंक्लूड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा आपनकर को लिस्ट रे अछि को लिस्ट अनुसार एटा आपनकर थर्ड लिस्ट जोटा कि हमें कनकरेंट लिस्ट बोली कहि थांती व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट को पार्ट रे आपनकर को जाई छी इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट तो करेक्ट आंसर जदि हमें देखिबा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन in which case Supreme Court stated that the preamble of the Constitution can also be amended under Article 368 but it should not be violated of the basic structure. Kesavananda Bharati India is a republic. What does it mean? India republic यार अर्थ कौन ना there is no hereditary rule in India. What is the correct sense of word secular in the context of India? Secular अर्थ कौन बा sense पचारिछि secular अर्थ होछि there is no religion of the state in India. The element of social, economic and political justice एटा आपनकर included in the preamble are related to एटा आपनकर कहा सहित related देखिबा ई क्वेश्चन करेक्ट आंसर कोन हबो किए कहबो एटा आपनकर कहा सहित रिलेटेड जो माने जॉइन करिया पय चाहू छ हम सहित जॉइन करि परिबो तो एटा जदि हम देखिबा एटा आपनकर रूसियन रिवॉल्यूशन सहित रिलेटेड रूसियन रिवॉल्यूशन ओमकार साउ बहुत बढ़िया इन व्हिच केस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 69
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम बेरुबरी यूनियन केस ऑल पर्सन आर फुली एंड इक्वाली ह्यूमान एटा को आपनकर कौन कह जाए कलेक्टिविज्म सोशलिज्म यूनिवर्सलिज्म ना आपनकर इंटरैक्शनिज्म एटा को आमे यूनिवर्सालिटी बोली कहबा यूनिवर्सालिटी नेक्स्ट देयर इज temporal sovereignty in India because the preamble of the constitution begins with 71 number question begins with कोउटो आपनकर आरंभ होईची begins with तो करेक्ट आंसर होची आपनकर with the people of India with the people of India where are the ideas and objectives outlined in the preamble of the constitution in fundamental right in DPSP na in fundamental duties na all of the above कौन हम करेक्ट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची all of the above what is the most important element of the state कोटा सबुठारु important sovereignty is the important who has given the name of political horoscope to the objective किए देइथिले KM मुनुशी the preamble is not a part of the constitution in which case Supreme Court expressed this view तो एठी जदि आमे देखिबा करेक्ट आंसर होची बेरुबारी सिंह केस 1960 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया How many states and union territories are there in India? 28टा 8टा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी What is the maximum number of seats reserved for union territory in लोकसभा लोकसभा पई जदि हम देखिबा केतरा रहइबो रिजर्व लोकसभा पई जदि हम रिजर्व देखिबा केतरा रहइबो देखिबा वेरी गुड करेक्ट आंसर होचे मात्र 20 टी When was Jammu and Kashmir divided into two separate union territories केबे एटा आपनकर सेपरेट हैला जम्मू एंड काश्मीर एटा आपनकर केबे सेपरेट हैला तो करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा ऑप्शन नंबर डी हबो अक्टोबर 31 2019 in which act was the provision of a federal government in British India 79 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 in which year Fazal Ali Commission related to the recognition of states was formed एटा कौन हम को करेक्ट आंसर जो मैंने जॉइन करिया पे चाहुंचो 8917270933 ए नंबर रे 250 टंका पेमेंट करके हम सहित जॉइन करि परिबो तो करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हबो जोडा होची 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन हैज फॉर्म्ड हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी नवंबर 1956 अनुसार मात्र 14टा स्टेट्स आ 6टा यूनियन टेरिटरी इन व्हिच ईयर सिक्किम वाज मेड ए स्टेट ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर होची अंडर
36 constitutional amendment. In India, union territory are administered by whom? 83 number question. Correct answer, President. In the Civil Amendment Act 2019, there is a provision to provide the citizenship of India to Hindu, Buddhist, Sikh, Jain, Parsi, Christian citizens of which country? Correct answer, all of the above. Correct answer. Next. On what grounds can the citizenship of an Indian citizen be terminated? को ग्राउंड रे टर्मिनेट करा जाई परिबो? 85 नंबर क्वेश्चन. करेक्ट आंसर ये सब अनुसार आपनकर रहइबो. ऑप्शन डी. PIO जोटा को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. कार्ड होल्डर कैन नॉट परचेज इन इंडिया. अर्बन लैंड किनी परिबेनी, एग्रीकल्चरल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एग्रीकल्चरल लैंड. ऑप्शन बी. Who has been given the power to enforce fundamental rights by the constitution? एटा कहाँ तर रही? एटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दीटा आपन रही परिबो. तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 of the Indian Constitution is to ensure the supremacy of Constitution in the context of 88 number fundamental rights. Option number A of correct answer. In which article the right to equality is extended in Indian Constitution? आर्टिकल कहते in which articles the right to equality extended in Indian Constitution? तो करेक्ट आंसर 89 नंबर 14 रु 18. The fundamental rights of equal pay for equal work has been granted by Supreme Court by the keeping the word socialism used the preamble of the Indian Constitution in totality with which article? आर्टिकल केते रु केते? आर्टिकल 14 रु 18. ऑप्शन बी. ना 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 सॉरी एटा क्वेश्चन भूल अछि. एटा आपनकर हबो 14 आ उडा होची 16. मात्र 14 आ 16. Which one of the article of the Indian Constitution guarantee equality of opportunity to the all citizens of India in matter of public employment? Article 16 1 out 2. Under which article of the Indian Constitution it has been provided that an accused of an offence cannot be compelled to be a witness against himself? देखिए किए कहबो करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर आर्टिकल 20C. Which article of the Constitution provides protection to the accused from double punishment and witness against himself in respect of conviction? 11 number question. Article 20. Which article of the Indian Constitution protects the right of a person to travel abroad? Article 21 is the correct answer. Article 21.
Lokasabha can be dissolved before the completion of its term by Lokasabha केमिति डिजल्व हबो लोकसभा किपरि डिजल्व हबो लोकसभा तो करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट्स इज रिलेटेड टू प्रोविजन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन 11 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर आर्टिकल कहते 24 इज द करेक्ट आंसर 24 व्हिच राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 97 नंबर फंडामेंटल राइट व्हिच ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज बीन कलेक्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट आंसर जदि हमें देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बाय व्हिच एक्ट डिड इंडियन गेट्स राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 99 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची आपनकर जो चार्टर एक्ट रही 1833 Where is the provision of the right to equal pay for equal work made of the constitution made in the constitution of India एटा आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे कह जाय हला थैंक यू ये थिला आपण मानक पई 100 क्वेश्चन तो बहुत ही फास्ट करैली कोनोस भी एक्सप्लेनेशन मो एथरे रखी नाही कारण तुम मानकर रिकमेंडेशन थिला जे सर टिके फास्ट करंतु तो निश्चित भाव में क्लास टी केमिति लगिला मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे एवं ता सहित पीडीएफ पई जदि चाहउचंदी डिस्क्रिप्शन ले को टेलीग्राम चैनल लिंक अछि जाई के जॉइन करि परिबे एवं जदि आपण माने थ्योरी सहित जदि एमसीक्यू पढ़िया पई चाहउचंदी आम सहित जॉइन करि परिबे मात्र 250 टंका रे ए जो नंबर देखुचंदी 8917270933 ए नंबर रे पेमेंट करिकी सेम नंबर स्क्रीनशॉट शेयर कले आम आपण मानकु जॉइनिंग करे देबु जोतरे की लाइव सहित रेकॉर्डेड भी तुम मैंने पाई परिबो थैंक यू।